students. Today we will discuss a new topic, that is goodwill. Its nature, valuation and accounting treatment. It is a chapter number 3 of class 12 after fundamental of partnership. In this chapter basically we will learn what is goodwill and how its value is computed and what is the basic meaning of goodwill. If we say the point number 1, एक नॉर्मल सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं. एज पर दैट नॉर्मल सिचुएशन, पॉइंट नंबर 1 says over a period of time a well established business develops and advantages of good name, reputation and wide business connections. This helps the business to earn more profit. This helps the business to earn more profits as compared to a newly set up business. In accounting, the monetary value of such advantages is known as goodwill. So if we talk about the goodwill, it is just the monetary value of advantages of a firm having. Suppose in near about you see the shop which are very older, uh, from whom you are traded or taking goods and services. If they are more old, then you will do a faith over them. जैसे कि अक्सर हमने ये देखा है कि अक्सर एक दुकानदार एक खास बात कहते हैं कि जब भी मान लो खासकर आप सुनार की दुकान पे गए, कोई बहुत ब्रांडेड शोरूम नहीं है, वो लोकल जो मार्केट में आपके घरों के आसपास गोल्ड स्मिथ बैठे होते हैं, आप उनसे जब बात करते हैं कि ये प्योर है नहीं है, कितना प्योरिटी होगा, क्या रेट होगा, एक सिंपल सी लाइन में वो आंसर देते हैं कि हम पे भरोसा नहीं है, हम पिछले 10 साल 15 साल 12 साल इतने साल से यहीं बैठे हैं एंड यू थिंक कि ये टाइप पर्सन इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा है तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. एज कम्पेयर टू अगर कोई न्यू फर्म गोल्ड स्मिथ की ओपन होती है और वो कहता है कि ट्रस्ट ओवर मी, तो आप ट्रस्ट कर भी सकते हैं बट आपका मन पुराने वाले के कंपेयर में इस वाले पे आपका ट्रस्ट कम होगा. ओनली रीजन इज दैट कि उस दिन काफी टाइम से वो बिजनेस कर रहा है और आप उसे देख रहे हो और उसकी मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू अ शॉप टू परचेज क्लॉथ एंड while choosing them you saw two cloths. मैं आप कपड़े की बात कर रहा हूँ कि 2 कपड़े आपने देखे. उन दोनों कपड़ों में हमने देखा कि एक विमल ब्रांड का कपड़ा है और दूसरा कोई लोकल ब्रांड है. शॉपकीपर कहते हैं दोनों एक जैसे हैं बट लोकल वाला सस्ता है, विमल वाले का ये रेट है. बट सस्ता होने के बावजूद हमारे मन में क्या होता है कि नहीं, ब्रांड का है तो ज्यादा ठीक होगा. हमारे मन में मतलब विमल की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, शॉपकीपर भी लोकल ब्रांड को सपोर्ट कर रहा है, बट हमारे मन में कहीं ना कहीं जो ब्रांड वैल्यू है वो इफेक्ट करती है कि वो अगर ब्रांड के साथ बेच रहा है, कंपनी ब्रांडेड है तो अच्छा होगा. तो ये जो एक फीलिंग है जो लोगों के मन में डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज गुडविल. जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में क्लियर किया गया है, over a period of time a well established business, the business which is well established, you know, well established business, Bajaj, Reliance, when you have well established business, develop an advantages of good name. उनका डेवलप कर लेते हैं एक गुड नेम, रेपुटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शन. दिस हेल्प द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, ड्यू टू विच दे आर अर्निंग मोर प्रॉफिट बिकॉज दे हैव मोर कनेक्शंस एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस. सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेजेस इज नोन एज गुडविल. गुडविल के बारे में अगर मैं बताऊं तो गुडविल के बारे में एक और डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूं which is not written on the screen. Goodwill is an intangible assets. First thing is that is intangible. You cannot see. You cannot see where is the goodwill of Reliance company, where and where is the goodwill of Bajaj company. It is intangible. It is intangible assets which places an enterprise at an advantageous position, due to which an enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort. इट मीन एक बिजनेस की रेपुटेशन इतनी ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करता है, इसके बावजूद वो न्यूली कंपेयर्ड या नॉर्मल जो बिजनेस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल जो अर्निंग है उससे ज्यादा अर्न कर पा रहा है. दैट मीन दैट इज गुडविल. आगे हम ये कह सकते हैं गुडविल कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड
excess earning. It is present value of excess profit which the firm gets as compared to normal business. Third point says goodwill exists only when the firm earns super profit. This point says कि if an industry or a normal industry earns 10% of return, but if you have a goodwill, obviously बात है it will help you to do more sale, due to which due to which you will earn extra profit, that is known as super profit. So what super profit means? Super profit means if you are earning more profit as compared to others, yeah, if you are earning more profits than normal profit, then it will be termed as super profit. The super, if there is a super profit in the business, it means firm have goodwill. It means firm have goodwill. Next है any firm can enter any firm that earns normal profit or is incurring losses have no goodwill. It means if a firm earning just normal profit, like a new business doing, the firm earn just normal profit, or even if firm earning losses, it means firm is not able to do good sales on the base of its goodwill. Hence, it is termed. It will be said there will is no goodwill of the firm. I have explained you a concept that goodwill is an intangible assets. Let us discuss that is what is tangible assets and what is intangible assets and what the rule says about dealing these assets. So tangible assets are the assets which have physical existence, which have physical existence. For example, they can be seen, touched. For example, our examples are land, building, plant and machinery, etc. Intangible assets are the assets which do not have physical existence. They cannot be seen or touched. For example, goodwill, patent is a permission which cannot be seen. Trademark, for example, if you see a certain logo on a certain product, then you identify from that logo it related to some specific brand. For example, polo, you see a person riding on the horse. You see the logo of many sports brands like Nike. So trademark are also a symbol which gives extra profit to the firm. So intangible means physically there is a symbol and there is no any kind of building. Are examples of intangible assets. Up as far as intangible is concerned, Accounting Standard 26 deals with the intangible assets. What it says, as we all know, accounting standards are issued by Institute of Chartered Accountant of India. ACAI has issued standard for accounting. It is accounting standard 1, 2, 3, 4. Many standards are there. But for intangible assets, the Institute of Chartered Accountant of India have issued Accounting Standard 26, which deals only with treatment of intangible assets. What it says an intangible assets is an identifiable, it can be identified, non-monetary assets without physical substance held for the use in production, supply of goods and services, for rental to others or for administrative purposes. यानी ये एक अनटचेबल है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं एंड विच कैन नॉट बी सीन और इसको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन में और अपने सर्विसेज में. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुडविल, इट मीन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ गुडविल. It is goodwill is an intangible assets. Goodwill belongs to category of intangible assets like patent, copyright, trademark, license, etc. It cannot be seen. It cannot be felt. It cannot be transported physically. It does not suffer wear and tear. As such, question of depreciation does not arise. Why it is intangible assets? Because it cannot be tear off. It cannot be do wear and tear, due to which depreciation is not applicable on goodwill. Next is it is a valuable assets. No doubt it cannot be seen, but it is valuable. Like other assets, goodwill also have monetary value. From accounting point of view, it is necessary that it
has some monetary or saleable value. In accounting sense, there should be a value of goodwill because it is sold in the market. Third characteristics of goodwill is it cannot be sold separately. You cannot sold I have sold only goodwill, but business has been not sold. If it means if a person or a company sell its business to other company, then goodwill will also be transferred to that company. It cannot be said that I am solding my just a business to you and goodwill will retain at me, or I am solding just goodwill to you but business retain with me, because goodwill depends on many factors: location of the business, uh, duration of the business, ability of business, name of business. So if you sell the business, then goodwill is also transferred to that person. All assets cannot be separately. All assets can be separately sold, but goodwill cannot be sold separately. This is why goodwill has no separate existence, while other assets have. Hence, it is a fictitious asset as it is purchased or sold with any assets. It can be sold and purchased with other assets. It cannot be sold in isolation. Goodwill helps in earning extra profit. We have already discussed. Valuation of goodwill is difficult task. No doubt there are so many methods, but valuation of goodwill in exact sense is little bit tough. You cannot say exact this is the amount of goodwill. Goodwill is always computed on estimated basis कि अब लगभग इतना goodwill होगा, इतना हमें extra profit हो रहा होगा. You cannot say it is the exact amount of benefit out of goodwill. One more thing, it is about the treatment, that is it is valuable intangible assets. This is a valuable intangible assets. What is it? Goodwill is amortized over its estimated useful life. Accounting standard 26 says intangible assets prescribes that goodwill should not be recognized in books of account. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर ही हमारे आगे बहुत से ट्रीटमेंट बेस्ड है. दैट goodwill should not be recognized in books of accounts unless consideration is paid for it. It means if you have paid any consideration to obtain goodwill, then you can show it in balance sheet. It can be shown as assets. But if you have earned the goodwill, you cannot show the value of goodwill in the firm. Suppose a business have doing एक बिजनेस है वो काफी टाइम से चल रहा है. काफी टाइम चलने के बाद उस बिजनेस को किसी ने सोल्ड कर दिया. तो सोल्ड करने के बाद उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, वो सारे बेनिफिट जो परचेज करेगा उसको मिल जाएंगे. जो परचेज कर रहा है वो उस जो भी उसे बिजनेस परचेज किया है उसकी सारी एसेट्स लेगा. अगर उसकी कोई लायबिलिटी रह रही है तो वो भी लेगा. अगर वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है, सपोज करते हैं कि एक बिजनेस जो है वो परचेज किया गया, सॉरी उसकी जो एसेट्स परचेज की गई, एसेट्स की वैल्यू थी 10 लाख, और जो लायबिलिटी उस बिजनेस की ली गई, कि हम पूरा बिजनेस ही ले रहे हैं तो एक रनिंग बिजनेस से परचेज किया जाता है तो उसकी अपनी एसेट्स भी होती हैं, अपनी लायबिलिटीज भी होती हैं. तो जो हमने एसेट्स ली उनकी वैल्यू 10 लाख थी, जो लायबिलिटी ली उस बिजनेस की उसकी वैल्यू थी 8 लाख. तो 2 लाख हम उसे 2 लाख हम आपकी लायबिलिटीज जो है 8 लाख है, जो आपकी एसेट्स है वो 10 लाख है. 2 लाख इज द डिफरेंस. तो 2 लाख हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसको हम गुडविल कह सकते हैं. तो इस केस में आप गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो बिकॉज यू हैव पेड अमाउंट फॉर इट. अगर आपने इसके लिए पे नहीं किया, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इन इट योर बुक्स ऑफ अकाउंट. देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. वेयर एज परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड. It is not recognized because its value is subjective and not evidenced by payment. हम सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल तो लेते हैं सब्जेक्टिव तरीके से, बट हमें उसके लिए कोई पेमेंट हमने नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं है कि हमने कितनी पेमेंट करी है उसको अचीव करने के लिए. Whereas purchase goodwill is recognized by evidenced by payment. तो आप जो परचेज गुडविल है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो किसी खास पेमेंट से कि हमने पेमेंट करी थी इसलिए इतनी की वैल्यू है. तो इसलिए पेमेंट यानी परचेज गुडविल को आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल से रिकॉर्ड नहीं करोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट
पैराग्राफ है जिसके ऊपर ही हमारे क्वेश्चंस आगे बेस्ड होंगे। अगला है factors affecting the value of goodwill, यानी what are the factors on which our goodwill of the firm depends. It's simple as nature of business. A firm produces high value assets, products, or having a stable demand is earn more profit, therefore has more goodwill. यानी एक फर्म के पास जिसका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि उसकी डिमांड कम नहीं होती, नॉर्मल सेल होती रहती है, तो ठीक है उसकी गुडविल ज्यादा होगी। एक ऐसा बिजनेस जिसकी सेल अप एंड डाउन बार बार होती है तो उसकी गुडविल कम होगी। ऐसी लोकेशन, एक बिजनेस की अगर लोकेशन ज्यादा अच्छी है तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, अगर ज्यादा मेन रोड पर है, मेन कनेक्टिंग प्लेसेस पर है। और एक ऐसी बिजनेस की लोकेशन जो बहुत इंटीरियर में जाके होती है तो उनकी गुडविल थोड़ी सी कम होती है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर एक मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है तो नो डाउट वो फर्म को बेनिफिट देता है। इट इज efficiency of management that also decide the value of goodwill. Market situation, in monopoly condition or limited competition enables the concerned firm to earn higher profit, which leads to higher value of goodwill. यानी एक मार्केट में अगर बहुत कम लोग हैं तो वहां पे हर एक की गुडविल ज्यादा होगी, और एक मार्केट में जहां बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे गुडविल कम होगी। अगला है स्पेशल एडवांटेजेस भी कई बार मिल जाते हैं किसी फर्म को, किसी कंपनी को बहुत सारी बेनिफिट्स की वजह से, तो जिनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिल जाएंगे उनकी भी जो वैल्यू होगी वो गुडविल की वो ज्यादा होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द गुडविल, इट्स नेचर, इट्स क्लासिफिक, इट्स नेचर और फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। देयरआफ्टर we will move toward its practical part कि how we record the goodwill or how we calculate the value of goodwill. So next point is types of goodwill. We have already discussed that there is two type of goodwill. One is self-generated goodwill and other is purchased goodwill. अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और डिफरेंस करते हैं कि इसमें और डिफरेंस होगा क्या, with some examples. Here is example, self-generated goodwill. As the name suggests, it is internally generated form of goodwill. It is created because of number of attributes possessed by running business. A business have many factors which decides the earning capacity of a business. Like I have explained here, the factor affecting goodwill. So those factor who affects the goodwill decides the value of goodwill. Because if all factors are very good, that all will contribute more profit. If some factors are good, then some will contribute to earn more profit. So in a running business, the value of self-generated goodwill is computed by some methods, and how it is deals with, it is created over a period of time. Its valuation is subjective to judgment of the valuer. यहाँ पर वैल्यूअर डिसाइड करता है कि हम कितनी लगभग इसको बेनिफिट लेंगे, कितने साल का बेनिफिट लेना है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज अ सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टू द जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। जो वैल्यूअर इसको वैल्यूएट कर रहा है उसके जजमेंट पर डिपेंड करता है कि गुडविल कितनी होगी। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है इसके बारे में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी रेज्ड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम ऐड नहीं करेंगे। ऑल्दो इट इज कंसिडर्ड एज एसेट्स, नो डाउट हम इसे एसेट्स कंसिडर करेंगे, बट इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट विल बी ओनली रिकॉर्डेड व्हेन आइदर देयर इज अ परचेज और सेल ऑफ अ बिजनेस, और सम अदर पॉइंट्स आर देयर, वी विल डिस्कस इट लेटर। एंड सेकंड टाइप ऑफ गुडविल इज परचेज गुडविल और एक्वायर्ड गुडविल। It is that form of goodwill which is acquired by a business after making a compensation for it in cash or in kind. Purchase goodwill or acquired goodwill is a form of goodwill which a business acquires or takes by paying some consideration, by paying some compensation. It may be in cash or may be in kind. It mainly arises on the purchase of a business or branding. ये अराइज होती है जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं या कोई ब्रांड परचेज करते हैं। It will be recorded in books of accounts. Main thing is that purchase goodwill is recorded in books of accounts as some consideration has been paid for it. It is also shown in the assets. If it is recorded, then it is also shown in the assets of the balance sheet.
value of purchased goodwill is ascertained by mutual consent of the buyer and seller. जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो बायर एंड सेलर डिसाइड करते हैं कि कितनी की गुडविल होगी. एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोहन परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम हरी फॉर अ purchase consideration. Purchase consideration mean amount paid to person from whom business is purchased. It means Rohan have paid 3,60,000 to Hari to purchase the running business of Hari. अब आगे देखते हैं क्या है. बैलेंस शीट ऑफ हरी शोज एसेट जो हरी की हैं वो 4,30,000 है एंड जो आउटसाइडर लायबिलिटी है जो बाहर पे करनी है हमें वो 80,000 है. तो अगर हम सही मायने में बात करें तो हमारे पास नेट एसेट्स कितनी बची. टोटल एसेट्स 430 की थी हमारे पास, जो आउटसाइडर लायबिलिटीज थी वो 80,000 की थी. अगर हम इसका माइनस कर दें तो सही मायने में हमारे पास जो नेट एसेट्स बची हैं वो बची हैं 3,50,000 ओनली. दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. वेयर एज हम जो परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, इट मीन उस बिजनेस को परचेज करने के लिए हमने कितना पैसा दिया, वी हैव पेड 3,60,000. The net assets of the business is 3,50,000, whereas we paid to purchase the business is 360. It means we are paying 10,000 extra. That we are paying 10,000 extra from the value of net assets, and this is purchase consideration. So this 10,000 extra is termed as value of goodwill because we have paid 10,000 extra as compared to net assets of the firm. Hence, this 10,000 of goodwill will be recorded in asset side of balance sheet because we have paid for it. And this is the formula how we compute the value of goodwill when it is purchased. Thereafter, next point is that normally the need of valuation of goodwill arises at the time of sale of business. It is normally बिजनेस जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है हम उस टाइम करते हैं जब बिजनेस को सेल या परचेज कर रहे हो कि कितने की, जैसे हमने ऊपर के केस में किया. बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बट अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, इट मे ऑल्सो बी राइजेस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. हम इन फॉलोइंग सिचुएशंस में भी उसे राइज कर सकते हैं या करना हमें पड़ता है. वो सिचुएशन है, फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. यानी हम मानते हैं हमारे मान लो 3 पार्टनर थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. इनका रेशियो था 3:2:1. दिस इज द रेशियो ऑफ द पार्टनर. नाउ पार्टनर डिसाइडेड कि फ्रॉम नाउ द रेशियो विल बी 1:1:1. इट मीन in earlier time we are getting big profit or suffering loss in ratio 3:1, and now from now onward we will take all things in 1:1:1. It means the ownership or profit for future will be changed. So in this situation we have to compute the goodwill because ratio change होने की वजह से Mr. A is getting 3/6, whereas Mr. A now will get 1/3. So earlier he was getting 1/2, now he is getting 1/3. It means A have to suffer some loss in term of profit, future profit. So in this situation it is necessary to compute the value of goodwill so that the losing partner, the sacrificing partner may be given benefit of goodwill which have been earned in the past. Thereafter, if any admission of the new partner, or there is retirement of any partner, or there is death any partner, or dissolution of firm involving sale of business as a going concern, it means we are closing the books of the firm because we have sold it. Or amalgamation of partnership firms, it means 2 or more firms are combining each other and making a new firm. In this situation, all older firms will close their accounts and a new firm will born. In these all situations, we will do valuation of goodwill. Valuation of goodwill. These are the situations where valuation of goodwill is done. Basically, we can say if there is any change in profit sharing ratio
as the existing partner or new partners come in, if there is change in ratio, then we will compute the value of goodwill. Then these are the situations where we calculate the goodwill. Now, in these situations, we calculate the goodwill. How goodwill is calculated? So there are three methods to calculate the goodwill. One is average profit method, other is super profit method, and third is capitalization method. Out of three method, in today's class we will discuss the on first method. The rest two methods will be discussed in next class. So as per average profit method, how we compute the value of goodwill? Here is very simple. Value of goodwill is nothing but it is average profit into numbers of year purchase. This is the formula. But how this formula is derived, what is the meaning of these terms? I'm going to explain that. Average profit, we all know. Suppose we are taking the profit. A firm has earned profit. Firm is running from 5 years. The profit of first year, second year, third year, fourth year, and fifth year. If we make a sum of all 5 years profit and divide by 5, we will get an average profit. This is a simple meaning of average profit. So, but while doing calculating average profit, we should note certain points while calculating average profit. अगर हम average profit method की बात करें, it is very simple and wider followed method of valuation of goodwill. This method is very simple and is widely followed for valuation of goodwill. In this method, goodwill is evaluated by taking into consideration of average profit of last few years. And how many years it will be given in the question. Average profit of last few years. Average of such profits is multiplied by the agreed numbers of years. Whatever is the average profit you have derived, it will be multiplied by the agreed number of years. सब मान लिया हम 2 years 3 times से हम उसे इंटू कर देते हैं, तो हमें गुडविल मिल जाती है. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. नाउ हियर इज एवरेज प्रॉफिट हमने समझ लिया है. नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? It is number of year purchase means the years for which firm is likely to earn that much profit because of the reputation earned by its past effects. It means it is an expected value, estimated number of years, how many number of years the firm will earn same amount of profit as it is running or as it is earning today. So valuation of goodwill, average profit is the average of last 2 3 4 years, whatever is stated in the question. Whereas number of year purchase only means ki what are the expert says that as per the current position of the firm, the same amount of profit will run how much years, or and it means the same amount of profit can be earned due to past efforts of the firm for in future. That's why it is multiplied by the number of year purchase. So number of purchase is very simple, but while calculating average profit, we have to note down some important things. What is that? Any abnormal gain is excluded, must be excluded by deducting it out of the net profit for the year. That is gain on sale of fixed assets. सपोज करते हैं कि हमें 5 ईयर का एवरेज लेना है. किसी एक ईयर में जो वैल्यू जो प्रॉफिट हम अपने P&L अकाउंट में बात करें, एनी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और एनी गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम P&L अकाउंट में शो करते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आता है. मान लिया किसी ईयर हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है, और उस ईयर हमने देखा कि बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है 2 लाख. इट मीन आउट ऑफ 5 lakh 2 lakh is just because we have earned profit on sale of fixed assets, and it is not our daily routine. We sold our goods to earn profit. We do not sold our assets to earn profit. If such kind of abnormal gains, which is not the normal course of business, are in the balance sheet, it should be adjusted. If there is a gain, it should be deducted, and if there is any loss, then it should be added back. For example, in a certain year, there is a loss by fire of rupees 2 lakh, whereas the profit of the same year is 3 lakh.
इट मीन अगर वो लॉस नहीं, वो फायर नहीं होती तो हमारा प्रॉफिट 5 लाख होता, बट हमारी लॉस बाय फायर है, इस वजह से प्रॉफिट 3 लाख आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो लॉस बाय फायर है वो हर साल लॉस बाय फायर 2 लाख हर साल आना है, ये एक एबनॉर्मल इवेंट है। तो एबनॉर्मल का अगर कोई लॉस है तो उसे हम ऐड बैक कर देंगे, तो यानी अगर प्रॉफिट 3 लाख है तो हम ऐड कर देंगे कि भाई हमारा नॉर्मल इवेंट नहीं है, तो एक्चुअल प्रॉफिट उसका 5 लाख होना चाहिए जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट बनता है उस ईयर का। तो बेसिकली जो एवरेज प्रॉफिट है, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, एवरेज प्रॉफिट की जगह हम अगर वर्ड समझ लें अपने माइंड में, लिखिए बेसिक एवरेज प्रॉफिट, बट माइंड में क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। The term should be average maintainable profit. Why I am using maintainable? Because it is the profit which can be maintained over a years, and there should not be any abnormal gain or abnormal loss. Third point we should note while calculating average maintainable profit or average profit is any income received from outside the business, like income from non-trade investment, should be deducted out of the net profit. हमें अपने net profit में से any outsider business से अगर कोई income आ रही है जो हमारी business income नहीं है, उसे add नहीं करना चाहिए in order to compute average maintainable profit. Take an example. For example, goodwill of the firm is valuated at 3 years purchase of 4 years average profit. This is the important line to calculate the goodwill. It says 3 years purchase for of 4 years average. It mean हमें 4 years का average लेना है और जो number of year purchase है वो 3 है. It mean वो क्वेश्चन assume कर रहा है या वैल्यूएटर ने assume किया है कि same amount of profit 3 year तक earn होगा. The firm earned profit previous 4 years में है 15,000, 11,000, 18,000 and 16,000. वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सिंस यहाँ पर कोई एडिशनल नहीं दे रखी तो सिंपल सेल प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय 4, वी विल गेट द एवरेज प्रॉफिट दैट इज 15,000. एज पर द फॉर्मूला गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट इज 15,000, number of year purchase is here is 3 years, so it will multiplied by 3 and we will get 45,000 is the value of goodwill. This is the way how we compute the value of goodwill. Take another example. Hari and Kishan were partners sharing profit and loss in ratio 2:1. They admitted Shyam as new partner for 1/5 share. For this purpose, goodwill of the firm was to be evaluated. हमें evaluate करनी है on the basis of 3 years purchase, 3 years के purchase पर of लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पर जो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 2013-14 का 50,000, 40,000, 75,000. 2016-17 में हमें जो वैल्यू गिवन है अगर ब्रैकेट लगा के इट इज अ लॉस ऑफ 25,000 एंड 17-18 इज द प्रॉफिट ऑफ 50,000. One more thing is given, calculate the goodwill of the firm after adjusting the following. The profit for year 2014 and 15, it means this one, was calculated after charging 10,000 for abnormal losses of goods lost by fire. It mean इस ईयर में गुड्स लॉस बाय फायर हुए थे, इसे हमने चार्ज किया था, तो ऑब्वियस सी बात है इस ईयर में अगर हमने लॉस बाय फायर दिखाया होगा अपने पी&एल अकाउंट में तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, हमें इससे एडजस्ट करना पड़ेगा. हम कैसे करेंगे? हेयर द सॉल्यूशन. आप इस तरह से टेबल बनाओगे हमेशा, ईयर देन एडजस्टमेंट. इस ईयर के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इधर के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल आप डैश लगा सकते हो कि यहाँ कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है. इस ईयर में एक एडजस्टमेंट थी 14-15 में कि आपका प्रॉफिट जो गिवन था वो 40,000 था. हिज प्रॉफिट इज 40,000 एंड क्वेश्चन सेज कि 10,000 एबनॉर्मल लॉस है, अगर लॉस नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता, इसलिए हम इसे ऐड बैक कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 50,000. तो उसके बाद हमारा जो आगे से हम नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं या मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं. आप इन सबको ऐड कर दीजिए, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, यू विल गेट 2 लाख. और जो हमें एवरेज लेना है वो एवरेज लेना है 5 ईयर्स का, 5 ईयर का प्रॉफिट है ये. तो जो भी आपका टोटल आया है उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, यू विल गेट योर एवरेज प्रॉफिट दैट इज 40,000. इन ऑर्डर टू कंप्यूट द गुडविल, it is average profit into numbers of year purchase. Average profit is 40,000, number of year purchase is 3 as given in the question. You will get goodwill that is 1,20,000. I think it is clear how we adjust this kind of entries in our question.
I'm taking one more question. Here is a Simran purchased Anita's business on 1st April 2020. It was agreed that value of goodwill at 3 years purchase. Value of goodwill will be 3 years purchase of average normal profit of last 4 years. हमें last 4 years का average normal profit लेना है. या normal का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था maintainable. प्रॉफिट बिजनेस के हमें दे रखे हैं 2017 का 18, 19, 20 के प्रॉफिट हमें गिवन है और ये हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं. फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हाट आर दोज? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, मतलब इस ईयर के बारे में बात कर रहे हैं. एन एसेट्स वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000. एक एसेट्स को हमने 10,000 गेन पे बेचा था. इट मीन प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एसेट्स का गेन आ रहा है. ड्यूरिंग द ईयर 2018, जो ईयर 31 मार्च 18 को एंड हो रहा है, एंड मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वर वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट. तो 30,000 हमने एज लॉस राइट ऑफ किया है. ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है तो इसे हम 2018 के प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेंगे. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, इस ईयर की बात कर रहा है वो. Firm's assets was not insured due to oversight. Oversight की वजह से फर्म का जो है वो उसके assets इंश्योर नहीं थी. इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 होती है. इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर. ये एक्सपेंस हमारा रेगुलर है, हर साल होता है, बट इस खास ईयर हम भूल गए थे करना. ये ना ओवरसाइट, ड्यू टू ओवरसाइट हमने इसे नहीं किया. इट मीन ये करना चाहिए था क्योंकि ये नॉर्मल है. तो इस ईयर के प्रॉफिट में से हम इसे हर साल माइनस करना चाहिए था. इस साल नहीं किया तो इस साल भी माइनस कर देंगे. तो कैसे इसकी एडजस्टमेंट टेबल बनेगी? ये रही 4 इयर्स की आपकी प्रॉफिट एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. उसके बाद एडजस्टमेंट की बात करें. फर्स्ट पॉइंट में था कि 2017 में से गेन है तो हम इसे माइनस कर देंगे. देयर आफ्टर लॉस हुआ था, लॉस की वजह से प्रॉफिट ये कम रहा होगा, एड बैक कर देंगे. उसके बाद 2019 में वो कह रहा है कि ओवरसाइट की वजह से प्रीमियम रह गई थी तो इसे भी माइनस करना पड़ेगा, हम माइनस कर देंगे. दिस इज द नॉर्मल और मेंटेनेबल प्रॉफिट. 2020 में हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपल वी विल एड इट एंड वी विल गॉट दिस. इट इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज योर normal total of normal profit divided by number of year purchase. You will get the average profit. And then goodwill is calculated by using the formula average profit into numbers of year purchase and you will get the value that is 4,95,000. I think this is clear कि how we adjust how we do the adjustments which is given in the question. How we adjust if it is a profit or it increase the any abnormal gains should be deducted, any abnormal loss should be added. Here is one more question. I think all you can do, but I'm doing it. Location, love and कुछ partners equally थे. They admitted a new partner. Goodwill evaluate करनी है 2 years purchase के ऊपर of average profit of last 4 years. Last 4 years का हमें profit given है, ये loss दे रखा है हमें. इसमें कह रहा है 2016 का जो हमारा प्रॉफिट है ईयर है उसमें एक एबनॉर्मल गेन है. एबनॉर्मल गेन माइनस कर देंगे. फर्म इनका एबनॉर्मल लॉसेस 20,000 2017 में एक लॉस हुआ था, एड बैक कर देंगे. रिपेयर ऑफ कार अमाउंटिंग टू 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स ऑन 1st June 2017. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल्स 12% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. अब ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा. पहली बात तो ये 1st June 2017 के लिए है तो ये ईयर जो बना वो ईयर बना 17-18, मतलब वो इस ईयर के प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करेगा बेसिकली. अब ये कह क्या रहा है कि रिपेयर हुई थी कार की. हमें पता है रिपेयर इज अ रेवेन्यू नेचर आइटम शोन इन द पीएनएल अकाउंट एंड एज एक्सपेंस माइनस हो जाता है. लेकिन सिंस इट इज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट, हमने इसे व्हीकल्स अकाउंट में डेबिट कर दिया है. व्हीकल्स अकाउंट में डेबिट करने का मतलब हमारे व्हीकल्स की वैल्यू बढ़ गई होगी और वो वैल्यू बढ़ गई होगी तो हमने हर साल उस बढ़ी हुई वैल्यू का डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा. तो हमारे पास गलतियां दो हुई. एक तो जो रिपेयर अकाउंट में जाना था उसे हमने व्हीकल्स में ऐड कर दिया जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा. पहली बात तो 50,000 अगर रिपेयर में जाता तो हमारा जो ये इस ईयर का लॉस है ये और बढ़ जाता.
अगर भाई हमारा लॉस 55,000 आ रहा है, जिसमें से हमने 50,000 का तो अपना रिपेयर का खर्चा दिखाया ही नहीं, तो सही मायने में ये खर्चा और दिखाएंगे तो लॉस वैल्यू 1,05,000 प्लस जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया होगा इसके ऊपर वो एक्स्ट्रा इसलिए लगाया होगा क्योंकि ये नॉर्मल खर्चा था, व्हीकल्स में ऐड नहीं होना चाहिए था, तो उतना डेप्रिसिएशन हम कम करेंगे। बट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं वन बाय वन इसका ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट है ये एबनॉर्मल गेन है, माइनस कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगले ईयर में हमें पता है 20,000 एबनॉर्मल लॉस है, ऐड कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू। आफ्टर दैट इस ईयर में हमारा लॉस है 55,000। अब यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये एडजस्टेड वैल्यू है, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड 50,000। 50,000 हम ऐड करेंगे ईयर। 50,000 जो है ये हमारा रिपेयर का खर्चा है जो गलती से हमने पीएनएल में डाल दिया था। अब उसके बाद क्या है, सिंस अगर हमने इसे व्हीकल अकाउंट में शो कर दिया है तो उस ईयर इसका डेप्रिसिएशन दिखाया होगा जो कि गलत था। अगर हम उसे रिपेयर शो करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन भी कम लगेगा। बट क्योंकि हमने इसे व्हीकल्स में दिखा दिया था उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, इसलिए डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा होगा, तो जितना डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये दिखाएंगे माइनस होगा, प्लस डेप्रिसिएशन जो गलती से डेबिट हो गया था 50,000 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% था और हमने 10 महीने के लिए उसे यूज किया, तो आपका डेप्रिसिएशन बनेगा 5,000। तो 5,000 ऐड करेंगे, आपकी इसमें हम अगर बात करें हमारे पास जो 50,000 हम 5,000 हम ऐड करेंगे और 50,000 माइनस करेंगे। 50,000 माइनस इसलिए क्योंकि हम अब यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट लॉस में 50,000 माइनस करना हम भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, अब माइनस कर देंगे, तो माइनस 50,000 इस एडिशनल कॉलम में, माइनस 50,000 प्लस जो गलती से डेप्रिसिएशन लग गया था वो ऐड बैक कर देंगे, प्लस 5,000, नेट वैल्यू इज 45,000 जो यहाँ पे शो कर रखी है। सो by doing all this the net loss for that year will be 1 lakh. after that हम बात करें, इसमें कोई इसमें नहीं देखी, लेकिन ये जो हमने रिपेयर शो किए जाते हैं इसको उस ईयर में तो 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा होगा, साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर यानी ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इस ईयर में भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा उस अमाउंट का जो हमने व्हीकल्स में ऐड कर लिया था, इसीलिए हम उस ईयर का भी डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे कि 50,000 का हमारी जो वैल्यू थी उसका 12% अगले ईयर हमें डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा दिखाया होगा क्योंकि हमने इसे ठीक नहीं किया था, तो 6,000 जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा है उसे हम ऐड बैक कर देंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। तो यानी ये जो आइटम है, इस टाइप के आइटम ऐसे होते हैं कि अगर किसी ईयर हो जाए तो उसके बाद के ईयर्स में भी इसका फर्क पड़ता है, तो हमें इसे केयरफुली करना है। जैसे यहाँ पर जिस ईयर में हमने दिखाया उस ईयर का ट्रीटमेंट कर दिया 5,000, नेक्स्ट ईयर भी हमने इसे व्हीकल्स मान रखा है तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन दिखाया रहा होगा, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को कम करेंगे, फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो हमने फालतू दिखा रखा है उसे हम हटाएंगे नहीं, ऐड बैक करेंगे अपने प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट अगर हम डेप्रिसिएशन कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इट विल बी 150। आफ्टर एडिंग ऑल दिस यू विल गेट 230, दैट इज टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज कंप्यूटेड बाय total normal profit divided by number of years. You will get average is this one, value of goodwill is average profit this one, and number of year purchase that is 2. You will get the answer, that is value of goodwill. This is the way how we treat different, how we will do the different adjustment while calculating normal profit. And here is another question. यहाँ पे क्लियरली यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है, यहाँ पर एक इंश्योरेंस प्रीमियम है एक्सक्लूड कर रखा है उसे, एक एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर रखा है, इस ईयर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारा लॉस है, आपको गुडविल निकालनी है, 2.5 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज नेट है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने किया था हमारे ईयर्स आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपका जो अमाउंट है उसमें जो भी एडजस्टमेंट है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, आंसर आपके पास है। आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया, उसके बाद हम सबको सम करेंगे, दिस इज योर टोटल, देयर आफ्टर एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लगाया, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला लिखा एंड यू विल गेट द गुडविल। दिस इज द वे हाउ वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। डे आफ्टर हियर इज अ वन क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, डू बाय योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट वन इज एवरेज weighted average profit method. It is very simple method. ये यहाँ पर भी हमें एवरेज प्रॉफिट ही लेना है, ये भी एक एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, बट इसमें हम कुछ वेट्स को यूज करते हैं।
कंप्यूटेशन के समय हम कुछ वेट्स को यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे इन दिस मेथड इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वेट्स। हम उसे कुछ वेट असाइन कर देते हैं जो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम वेटेज असाइन कर देते हैं। देन ईच ईयर्स प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग वेट। हम हर ईयर के प्रॉफिट को कॉरस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इज टेकन, उस प्रोडक्ट जो भी आपने इनपुट किया था उसका टोटल हम करते हैं। दिस सम इज देन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स, फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं बाय सम ऑफ वेट से, यू विल गेट योर एवरेज वेटेड प्रॉफिट। अब कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, हम फॉर्मूला देख लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब तक हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, अब निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमने वेट्स और उस ईयर का प्रॉफिट जिन्हें आपस में इंक्लूड किया था उनका टोटल करेंगे डिवाइड बाय टोटल वेट्स, तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए जो भी आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है इसको आप इंटू कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो आपका एग्रीड है एज पर द क्वेश्चन। एक हम क्वेश्चन लेते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, लास्ट 5 ईयर्स के हमारे हैं 10,000, 12,000, 15,000, 12,500 and 9,000. Calculate the goodwill on the base of 3 years purchase of weighted average profits, assigning the weight 1 2 3 4 5 respectively। इसी ईयर को हमें ये वेट देनी है। तो सिंपल हमने अपने ईयर्स लिख लिए, प्रॉफिट्स लिख लिए, उनके वेट्स लिख लिए कितने वेट्स हैं, उसके बाद प्रॉफिट को और उसके वेट को हमने आपस में इंटू कर दिया, वी विल गेट द प्रोडक्ट दिस वन, दिस इज द टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द टोटल ऑफ वेट। So weighted average profit will be total of the product of profit divided by total weights. This is your average profit. Then goodwill is computed. Weighted average profit into numbers of year purchase, that is 11,600 into 3. You will get goodwill, that is 34,800. This is the way how we do the questions from these two methods, that is average profit method and weighted average profit method. Thank you.